हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है वो है फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर मौजूद हैं और उनके आंसर्स भी यहाँ पर हैं। चलिए इन आंसर्स को पढ़ते हैं और उसके बाद हम इनको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्यों नेसेसरी हैं? तो इसका यहाँ पर आंसर है मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स बिकॉज दे प्ले क्रूशियल रोल इन प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। प्लांट नीड दीज न्यूट्रिएंट्स टू कैरी आउट essential processes such as photosynthesis, respiration, and the production of enzymes and hormones. Mineral nutrients also help plants to build strong cell wall, protect against the pest and disease, and regulate water balance. Without these essential nutrients, plants would not able to survive and reproduce. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं why N2 nitrogen gas is included in mineral nutrient although it is not mineral. जो नाइट्रोजन गैस है वो मिनरल न्यूट्रिएंट में इंक्लूड क्यों किया गया है जबकि वो तो एक न्यूट्रिएंट नहीं है, वो तो एक मिनरल नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पर है वाइल nitrogen gas N2 is not technically a mineral, it is often included as a mineral nutrient because the vital element for the plant's growth and development. Plants require nitrogen in the form of nitrate, NO3, or ammonium ions for various biological processes. Nitrogen is a key component of amino acid, proteins, nucleic acid, and chlorophyll of all the which are essential for plants' structure and functions. Since plants cannot directly utilize atmospheric nitrogen, they rely on the conversion of N2 into these usable forms through biological nitrogen fixation involves in symbiotic relationship with nitrogen fixing bacteria through industrial process like the production of synthetic fertilizer. तो जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, ये एक मिनरल नहीं है बल्कि ये जो है प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अमीनो एसिड के अंदर, प्रोटीन्स के अंदर भी ये पाया जाता है और क्लोरोफिल के अंदर भी ये नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसीलिए प्लांट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं वाई डू डिजर्ट प्लांट रिड्यूस देयर लीफ साइज़। डिजर्ट प्लांट जो है वो खुद की लीफ जो उसके पत्ते हैं उनकी साइज़ को कम क्यों करते हैं? डिजर्ट प्लांट रिड्यूस देयर लीफ साइज टू अडॉप्ट एट द हार्श डिजर्ट इन्वायरमेंट। हियर आर द फ्यू रीजंस फॉर दिस एडाप्टेशन। सबसे पहला है रिड्यूस वाटर लॉस। Smaller leaves are smaller surface area which minimize the water loss and through transpiration. दूसरा है conserve water. Desert plants often have a thick waxy coating of hairs and reduced leaves which help in reduce water loss by creating a barrier against evaporation. Number 3 है minimizing overheating. Smaller leaves reduce overall heat absorption by plant, helping to prevent overheating in hot desert environments. Number 4 है reducing herbivory risk. Smaller leaves can be difficult to herbivores to locate and consume, reducing the risk of the damage by plants eating. तो ये हमारे पास यहाँ पर इसके रीज़न्स आ जाते हैं कि प्लांट्स डिज़र्ट प्लांट्स के लीव्स छोटे क्यों होते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है वाई डू कार्निवोरस प्लांट यूज़ इंसेक्ट्स एज फूड। Carnivorous plants use insect as a source of nutrients because they grow in poor soil, particularly in nitrogen deficient environments. By consuming insects, carnivorous plants obtain essential nutrients such as nitrogen and phosphorus, which are necessary for their growth and survival. The insects are really attracted by the plants and to bright colors and sweet smells, and once trapped by the plant they are broken down and absorbed by the plant's digestive enzymes. तो यहाँ पर इसका फोर्थ का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ है वाई फाइटोक्रोम पिगमेंट आर इम्पोर्टेंट इन पेरिडोजम। तो फोटोपेरिडिज्म के अंदर फाइटोक्रोम पिगमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है? तो यहाँ पर पढ़ते हैं इसका आंसर फाइटोक्रोम पिगमेंट्स आर इम्पोर्टेंट इन फोटोपेरिडिज्म बिकॉज दे हेल्प प्लांट्स परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस बाय द डे लेंथ एंड फोटो पीरियड.
These pigments are sensitive to the different wavelength of light, particularly red and far red light. By detecting the duration and quality of the light exposure, phytochromes enable plants to regulate critical development processes such as flowering, seed germination, and transition between the vegetative reproductive stages. They act as a photoreceptor, converting light signals into chemical signals and that trigger specific physiological response. Phytochromes play a key role in coordinating plants' growth and development and seasonal changes, allowing plants to optimize their reproductive success and adopt varying environmental conditions. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड. Annual rings are formed in trees as a result of seasonal growth patterns. During the growing season, the tree produces new cells that are relatively large and often and contain thin cell walls. These cells, known as the early wood, produce spring early and early spring, and when the ample there's ample moisture and warmth. As the growing season progresses, the environmental condition become less favorable and tree produces smaller cells and thicker cell walls. These cell walls are known as the late wood, are denser and darker in the color than the early wood. The transition from early wood to late wood creates a visible boundary or rings which represent 1 year of the growth. By counting the number of rings, scientists can determine the age of the plant and gain insight into the past environmental conditions. उसके बाद हमारे पास 7 क्वेश्चन है, why is cold treatment necessary for germination of seed in plants. तो कुछ प्लांट्स के अंदर कोल्ड ट्रीटमेंट क्यों लाजमी है, तो इसका आंसर यहाँ पर है. आप इसको जो है स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं या इसको यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वाई ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स. तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट का यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पर देख लें, इसको यहाँ से स्टडी कर लें, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं. तो ये हमारे पास जो है वो इसका लास्ट क्वेश्चन है. उम्मीद है आपको ये आज के क्वेश्चंस जो है वो अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.